we're going to be discussing sentence correction. And I'm assuming that you guys have done this and you are active on the chat box, so we can get through as many questions as we can today. Okay. Yep. So question number 1, 2, and 3. I'm gonna wait for some of you to send in your answers. Question number 1, 2, and 3, sentence correction. Please send in your answers so we can discuss. Okay. I am assuming that you guys have not done this. Which is my screen visible now? Full screen aa rahi hai sabke paas? Okay, cool. So you guys, I am assuming कि आप लोगों ने नहीं किया है, but let's go forward with this. Question number 1 is trying to keep her balance on the icy surface. Okay, Minka, good job. Thank you for listening to the instructions. Okay, yes, trying to keep her. So I have option C for this, and I have option B for this. Let's see what the correct option is. Tip, caught the pole and somersaulted into the soft snow. There is no problem with this question, so we will go with it. Then we have question number 2. Question number 2 mein did someone say anything else other than this? Wait, you're asking me why not question number B. So the ski tip of the last competitor caught the pole. Okay, let's read this sentence together. Trying to keep her balance on the icy surface. The ski tip of the last competitor caught the pole and somersaulted in the soft snow. So you tell me what is the subject here. So the subject in this sentence is the last competitor, right? Not the ski tip. So trying to keep her balance. Yahan pe, this is the subject, right? So this her is the last competitor and not the ski tip. So option number 1 gives you the subject right after the comma, which is the best approach. So there is no confusion कि ये ski tip की बात हो रही है या फिर. Okay, so I would also say that the answers in the key are a little bit confusing at some point. So do not rely on that, because obviously if I've given you something for practice, uske answers, if मैंने answers साथ दे दिए हैं, so chances of you guys doing it on your own without looking at the answers are very low. So do not trust the answer key. I will share an updated answer key after I'm done with this discussion. ठीक है? So question number 1 ये हो गया. Question number 2, that if you guys are answering question number 2, I have had D for question number 2, option D, which is correct, that the temperature dropped suddenly last night, which will mean that the shoots emerging from the soil will be killed by the frost. Now let's see the options. Which will mean that the frost, which is B, I'm on B, which will mean that the frost will kill the shoots emerging from the soil. And this will mean that the shoots emerging from the soil will be killed by the frost. So एक और चीज इसके अंदर someone asked me कि क्या trick होती है इसके अंदर, just keep an eye out. जो by the वाले sentences होते हैं ना, जिसके अंदर by the use होता है subject को, या sentence की structuring ऐसे होती है कि by the frost, by the subject, let's say. Chances of that being the correct answer are very low. ठीक है? और इसमें भी अगर देखें तो by the forest वाले options both are wrong. Most of the time, in the 95% of the cases, by the वाले structure के answers are wrong. चाहे वो question में given हो या कुछ question में जैसे यहाँ पे given है, इसका मतलब है it will be most probably an option that is not by the. ठीक है? So let's read option number D. And the resulting frost will kill the shoots that are emerging from the soil. So question number अगर D और E देखूं मैं, तो E में भी by the use नहीं हुआ है, but D is more clear. We have a lot of commas in E, which doesn't make sense कि comma के बीच में दो commas के बीच में हम modifier लगाते हैं normally. यहाँ पे जो sentence structure है, it's not clear, it's not grammatically concise. So we will go with option number D, जिसमें पूरा sense भी बन रहा है और clear भी है और proper cause and effect पता चल रहा है कि किसके रिजल्ट से क्या हो रहा है, कि टेम्परेचर के ड्रॉप होने से जो फ्रॉस्ट होगी, द रिजल्टिंग फ्रॉस्ट फ्रॉम द ड्रॉप टेम्परेचर विल किल द शूट्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल. कॉज एंड इफेक्ट याद है, हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था क्या चीज किसकी वजह से होती है और क्या चीज किस पे असर करती है. इफेक्ट असर करती है, कॉज क्या चीज किस चीज को
कंप्लीटली उसकी वजह से एक चीज होती है. सो यहाँ पे हम ये बात कह रहे हैं कि टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट हुई, जिसकी वजह से शूट्स मर गए दैट वर इमर्जिंग फ्रॉम द सोइल. ठीक है, सो इसमें कॉज एंड इफेक्ट सबसे क्लियर है. दैट्स दैट. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. द इम्पोस्टर eluded detection for so eluded का मतलब है avoided. The imposter eluded detection for so long because she conducted herself as though she were a licensed practitioner. Let's look at the options. As though she were a licensed practitioner. यहाँ पे were is not wrong. यहाँ पे if someone thinks कि were is the wrong option, it's not, because were एक hypothetical situation में use होता है. Like I said before, last class में मैंने कहा था were is used in a hypothetical situation. So let's see. अब यहाँ पे इसके अंदर नहीं है वैसे नॉर्मली, लेकिन कभी कभी ग्रामेटिकल के साथ साथ वोकैबुलरी की भी वो टेस्टिंग होती है कि कभी कभी स्पेलिंग्स में भी आपको मिलेगा कि स्पेलिंग्स में भी कोई प्रॉब्लम है. सो अगर इस सेंटेंस में हम देखें और बाकी ऑप्शंस को देखें तो उसके कंपैरिजन में ऑप्शन ए इज राइट. देयर इज नो स्कीमिंग एरर इन द ऑप्शन. ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. वॉज का ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, ये वाला. ठीक है, ये तो ऐसे ही कट हो गया बिकॉज हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें. लाइक शी वॉज अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर, ये वाला भी कट गया. लाइक एज इफ शी वॉज, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्डी है ये सेंटेंस, वर्डीलेस ज्यादा है, तो इसको इस ऑप्शन को भी हम नहीं चूज करेंगे अनलेस वी हैव अनलेस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा. लाइक एज इफ साथ नहीं यूज हो सकता, एज इफ होगा या लाइक होगा. एज इफ शी वॉज अ प्रैक्टिशनर विद अ लाइसेंस. प्रैक्टिशनर विद अ लाइसेंस एक एक्स्ट्रा वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं सेंटेंस में, दैट वी डू नॉट नीड. लाइसेंस प्रैक्टिशनर इज मोर कंसाइज देन प्रैक्टिशनर विद अ लाइसेंस. ठीक है, सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. In question number 4, being abandoned by our friends is the cause of great sorrow for us. ये sentence भी एक passive structure में है, which means कि chances of this being wrong are high. But let's see in this sentence कि इसमें ये सही है या गलत है. बाकी options देखते हैं. being abandoned ये हम कर चुके हैं. are being abandoned by our friends. are being abandoned या us being abandoned. यहाँ पे us being abandoned होगा या are being abandoned होगा. जब subject as subject यूज हो रहा होता है तो हम us यूज करते हैं या are यूज करेंगे. us being abandoned or are being abandoned. Can someone clear this for me? Do you think it should be us being abandoned or are being abandoned in option number B? Us being abandoned, yes. So this sentence is wrong. Being abandoned by a friend, we feel great sorrow. This sentence does not make correct sense. Abandoned by a friend, sorrow is the result. Also, the sentence sounds very awkward. We feel great sorrow when our friends abandon us. So I would understand if someone marked E here, but being abandoned by a friend is the cause of great sorrow for us. It is the most grammatically correct option, and it is giving a clear indication कि cause and effect क्या हो रहा है. Being abandoned by our friends is the cause of great sorrow for us. यहाँ cause and effect है in place, तो हमें clearly बताना है कि किस चीज के cause होने से क्या चीज affect हो रही है. ठीक है, so इसमें clearly पता चल रहा है कि being abandoned by a friend is resulting in great sorrow for us. ठीक है. Then question number 5. Question number 5 is, among the many reasons for his defeat in the election. Yes, A is correct. Among the many reasons for his defeat in the election was his, among the many reasons for his defeat in the election was his arrogant assumption that, ये question तो I feel like अगर आप आंसर पढ़ेंगे ही, आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन रीड करते ही समझ आ गया कि तभी I struggle. Did you guys see me struggling to make sense of the sentence in the first time? Because मेरे दिमाग में it wasn't making sense. I don't know what's wrong yet, but it doesn't make sense in my mind right now. But let's see what's wrong.
Among the many reasons for his defeat in the election was his arrogant assumption that his constituents were incapable of understanding economic conditions and his unwarranted attack on his chief opponent. अब मैं देखूं, मैं यहाँ पे you guys remember indefinite pronouns, एक list थी singular और plural की, उसमें among the many reasons is plural. So यहाँ पे was होगा, not were. Now let me see मेरे options were के साथ कौन से. Was के option तो मैं ऐसे ही कटा दूं पहले. Was and was. अब let's see कि were वाले options इस तरीके से solve होता है कि मुझे पता है was तो नहीं आएगा, तो मैंने was के सारे options पहले कट कर दिए. अब मैं देखूं मेरे were के options में कौन सा सही है. Were his arrogant assumption that his constituents were incapable of understanding economic conditions. Cool, this sentence sounds okay. Were his arrogant assumption, okay. Assumption होगा या assumption होगा? Can someone tell me ये एक assumption है कि constituents incapable है understanding के ये singular है या plural है? Is the assumption singular or is the assumption plural? Can someone tell me that his arrogant assumption that his constituents were incapable of understanding economic conditions, is the assumption singular or is the assumption plural? Cool. The assumption is singular, so मैं assumptions वाला option भी हटा दूं, ये कट हो गया. Let's see. Were his arrogant assumption that his constituents would be incapable of understanding? Would be is not required here. It's not a conditional sentence. Were his arrogant assumption. So option number B is the right option for this. Let's go to question number 6. If you guys have any questions, please let me know. But I will stop after this exercise to see answers. Let's see. More and more holiday makers are choosing to fly to remote islands in search of perfect beach, seeking sun, sand, and palm trees rather than centers of entertainment. Okay. अब मैं सबसे पहले तो ये देखूं कि मैं सेमीकोलन जो कॉमा वाले ऑप्शंस हैं वो तो मैं क्यों हटाऊंगी. कैन समवन टेल मी कि कॉमा वाले ऑप्शंस मैं क्यों सबसे पहले हटा दूंगी. क्विकली कैन समवन either unmute yourself or tell me in the chat box why am I going to remove or should I remove the comma wale options or no? Yes. Minka, both of these, the first clause is yes, independent. What about the second clause? Is the second clause a dependent or an independent sentence? Dependent, yes. अब what, let's see. So मैं ये तो हटा दूंगी सबसे पहले ये, because this doesn't make sense. Comma is not need, we do not need a comma here. अब now let's see the options. अब अगर मैं देखूं तो ये sentence इसलिए गलत है क्योंकि ये मेरा second वाला dependent clause है. Irfan, please explain what. Tell me what you want me to explain again. I'll explain. मेरा फर्स्ट वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यस, लेकिन मेरा सेकंड क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है. टेक्निकली वो एक इनकम्प्लीट क्लॉज है ना, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है एट दिस पॉइंट. या तो डिपेंडेंट होगा तो कोई ऐसा होगा ऑल्दो, हाउएवर, इफ, व्हेन, बिकॉज. यहाँ पे कुछ मिसिंग है. यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिसिंग है. अगर मैं दो सेंटेंसेस को सेमीकोलन से ज्वाइन करती हूँ तो वो दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए. So if I add a subject here, then that would make this an independent clause. अब let's see कि मैं subject कौन से वाले option में. So subject मेरे पास D में है और E में है. Technically I'm not. I just asked you guys, do you think I should remove semicolon वाला option और commas वाला option? I asked you this. So हमने comma वाला option इसलिए remove किया है because if you see both of these sentences cannot be joined by a comma. ठीक है, हम दो independent clauses को या तो coordinating conjunction fan boys के साथ join करते हैं या हम semicolon के साथ join करते हैं. ये comma से इसलिए भी नहीं join हो सकता because this is a long sentence and a comma is not sufficient to break this up. We need something a little more stronger than a comma but a little less strong than a full stop or a period. Okay, so let's look at the other options. Seeking sad, ye to aise hat gaya, there is a spelling error here.
Then let's look at the other option. Centers of entertainment is better or entertainment center is better? What do you guys think is the right option? Center of entertainment ज्यादा कंसाइज है या entertainment center ज्यादा कंसाइज है? Of course entertainment center ज्यादा कंसाइज है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में licensed practitioner is more concise than practitioner with a license. This is one of the tricks as well. You need to find the most concise option. ठीक है? So centers of entertainment वाले option भी मैं हटा दूं because I can see a better option here. ठीक है? Yes. Let me explain why. So now let's read the sentence again. More and more holiday makers are choosing to fly to remote islands in search of perfect beach, comma, they seek sun, sand, and palm trees rather than entertainment centers. So अगर मेरे पास यहाँ पे option, if I see these options, centers of entertainment वाले मेरे दोनों cut हो गए, ठीक है? So मेरा A और E cut हो गया, B भी मेरा cut हो गया because there is a spelling error. Now I have C and I have D. If I look at C, more and more holiday makers are choosing to fly to remote islands in search of perfect beach with sand, sun, palm trees, and no entertainment. C भी मेरा cancel हो गया because no entertainment is not the right option, right? No entertainment नहीं बताना हमें, हमें comparison बताना है. हम ये नहीं कह रहे कि वो इसलिए वो island choose करें because वहां पे no entertainment है. हम ये बता रहे हैं कि वो इसलिए choose करें because as compared to no entertainment centers उनको दूसरी चीज चाहिए. So option C is taking away from the meaning of the sentence. So C भी कर दिया. D is the perfect option here. अब saying this, I would also say that a sentence this long should have something stronger than a comma, but because we do not have that option here, we will go with option number D. ठीक है? I'll explain this again. Option B और C इसलिए कट गया because B तो इसलिए कट गया, हम सेमीकोलन का ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास, मैं यही बात बता रही हूँ. ऑप्शन बी मेरे पास इसलिए कटा क्योंकि ऑप्शन बी में एक तो सबसे पहले मेरे पास एक वोकैबुलरी में मिस्टेक आ गई, तो ऑप्शन बी कट गया. ऑप्शन सी में नो एंटरटेनमेंट आ गया. ठीक है, यहाँ हमें नो एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहे थे, हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे. ठीक है, तो ये भी कट गया दोनों. ठीक है, फिर आई वॉन्टेड technically yes it should be joined by a fanboy, a coordinating conjunction or a semicolon. Technically yes. ठीक है, मैं बता रही हूँ ये क्यों कट हुआ. Then centers of entertainment से ज्यादा concise option है entertainment center. जब आप sentence correction कर रहे हैं, you have to find the most concise, the grammatically correct and जो मीनिंग से सबसे क्लोजेस्ट हो सेंटेंस की, दैट. ठीक है, सो वो मेरे पास सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट वाले भी दोनों कट ऑफ हो गए, इसलिए मेरे पास ऑप्शन डी बचा. आइडियल सिचुएशन में आई वुड पुट coordinating conjunction between this, or I would put a semicolon between this. ठीक है, but we do not have better option here, so we will go with option number D. ठीक है, and another reason of using a comma here which doesn't make the sentence wrong is because जो second sentence है, they seek sand, sun and palm trees वाला, it is related to the first thought. ठीक है, ये दोनों थॉट सिमिलर है, सेम सब्जेक्ट की बात हो रही है, राइट? हॉलीडे मेकर्स की ही बात हो रही है नेक्स्ट सेंटेंस में, सो द सब्जेक्ट इज सेम, राइट? सो इट इज नॉट रॉन्ग टू यूज अ कॉमा हियर. Okay, let's go to question number 7. Question number 7 is the government requires that these forms should be submitted before the end of financial year. Now look at the options. That these forms should be submitted, that these forms be submitted, for these forms to be submitted before the financial year, before the end of the financial year. These form submission तो ऐसे ही कट ऑफ हो गया, grammatically incorrect. Requires these forms should be submitted is also not correct. So the option number B is the most correct option here because यहाँ पे ये सब conjunctive
this option is using the subconjunctive form of requirement or demand, which is that when you use a sentence like this, जो कि एक formal language में होता है, I'll explain subconjunctive form to you ताकि ये clear हो जाए. But option number B is the correct option here. The government requires that these forms be submitted before the end of financial years, because यहाँ पे हम as a compulsion ये बात नहीं कह रहे हैं that these forms should be submitted. यहाँ पे it is said as a statement. It is said, let's say, on a pamphlet for an instruction for a government office or something like this. That's why यहाँ पे should को हम avoid करेंगे और हम should के अलावा कोई sentence use करेंगे that need to be submitted. Should be used normally when we are giving okay, so this is a little tricky to explain, but let me find another example for this sentence so I can explain this in a clear manner. So I cannot find an appropriate example for this abhi at this point, but it subconjunctive, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, I were, I, we, she were वाला sentence, this is form of subconjunctive के. Sentence hypothetical है, sentence advice है, sentence एक instruction है या क्या है? Yes, you're right कि this is used as an advice, this is used as a, not as a precaution, but this sentence is used as an advice or as an instruction. तो यहाँ पे हम to be submitted, we do not need to use a should here, we just need to use a simple form of this sentence. Moving on to question number 8. After arduous months of fighting, the sight of the white flag being raised generated as much relief on the victor's side as it did on the vanquished. Vanquished कहते हैं कि जिनको like you know जो ज़्यादा जिनको destroy हुआ होता है, जिनकी बुरी हालत होती है, things like that in the context of this sentence. So let's look at the example. Let's look at the option. Okay, so one thing that I think I forgot to mention earlier, someone also asked me this, जो comparison के sentences होते हैं. So this is a concept that you need to learn and that you need to understand. जो comparison होता है, हम किस तरह करते हैं sentences में. So comparison जब मैं करूँगी ना किसी भी चीज का, I have an exercise for it. I thought we would go over this, or let me just find it. I had that exercise made so I could explain parallelism and comparisons to you guys in a clearer manner. So parallelism में issues कब आते हैं? जब हम कोई list बनाते हैं, sentence correction की मैं बात कर रही हूँ, और completion की नहीं, sentence correction की, yes. या जब दो चीजों में comparison हो रहा होता है, दो longer phrases में, या जब किसी भी दो चीज का normal comparison हो रहा है, ठीक है. अब जैसे मैं ये बात कहूँ कि Ali's sense of humor is better than Ahmed. Ali's sense of humor is better than Ahmed. Can someone tell me if this sentence is right or wrong? Ali's sense of humor is better than Ahmed. Come on guys, quickly. Ali's sense of humor, and I apologize for the bad writing because there's no reason for me to have bad writing, but it is what it is. Okay, cool. I think okay. Iman and Shahan and Ali are on the right track. अगर मैं सेंटेंस को ब्रेक डाउन करूँ और मैं सोचूं कि मैं एक्चुअल में क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अली का सेंस ऑफ ह्यूमर अहमद से बेहतर है. क्या अली का सेंस ऑफ ह्यूमर अहमद से बेहतर है या अली का सेंस ऑफ ह्यूमर अहमद के सेंस ऑफ ह्यूमर से बेहतर है? अली का सेंस ऑफ ह्यूमर अहमद के सेंस ऑफ ह्यूमर से बेहतर है. अब देयर आर मल्टीपल वेज टू करेक्ट दिस सेंटेंस. पहला है कि मैं बोलूं अली, अच्छा मैं दोबारा नहीं लिख रही, अली सेंस ऑफ ह्यूमर इज बेटर देन अहमद्स. एक ऑप्शन ये है. Ali's sense of humor is better than that of Ahmed. It's not correct, yes. या फिर तीसरा ऑप्शन है Ali's sense of humor is better than Ahmed's, sorry guys, Ahmed's
सेंस ऑफ ह्यूमर। इस सेंटेंस को सही करने के 3 तरीके थे। एक तरीका ये था कि मैं अहमद के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा दूं कि अहमद का अली का सेंस ऑफ ह्यूमर अहमद के सेंस ऑफ ह्यूमर से बेहतर है, या मैं लगाऊं अली सेंस ऑफ ह्यूमर इज बेटर देन दैट ऑफ अहमद, अहमद के सेंस ऑफ ह्यूमर से बेहतर है, या मैं बोलूं अली सेंस ऑफ ह्यूमर इज बेटर देन अहमद सेंस ऑफ ह्यूमर। Do I make myself clear? Are we clear on this, guys? Are we clear on the comparison sentence? If not, I will go forward with another example. Let's see अगर इसके अंदर ये वाली example कोई है. Okay, let's look at this example. Question number 2. I prefer my Japanese history class to sitting and listening to American history. अब मैं, you have to notice everything. Yes. I prefer my Japanese history class to my American history class. एक ऑप्शन ये है ये सेंटेंस का कि जापानीज हिस्ट्री क्लास को अमेरिकन हिस्ट्री क्लास से कंपेयर करूं, या मैं बोलूं कि मुझे अमेरिकन आई प्रेफर सिटिंग एंड लिसनिंग टू जापानीज हिस्ट्री क्लास टू सिटिंग एंड लिसनिंग टू अमेरिकन हिस्ट्री क्लास। मैं जापानीज हिस्ट्री क्लास को अमेरिकन हिस्ट्री क्लास में बैठ के और सुनने से कंपेयर नहीं कर सकती। या तो मैं जापानीज क्लास को अमेरिकन क्लास से कंपेयर करूंगी, या मैं जापानीज क्लास में बैठ के सुनने को अमेरिकन क्लास में बैठ के सुनने से कंपेयर करूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी। आई प्रेफर माय जापानीज हिस्ट्री क्लास टू सिटिंग एंड लिसनिंग टू अमेरिकन क्लास, अमेरिकन हिस्ट्री। यहाँ पे किसमें चेंज आएगा? आई प्रेफर माय जापानीज हिस्ट्री क्लास टू माय अमेरिकन हिस्ट्री क्लास। ठीक है, सिटिंग एंड लिसनिंग चेंज होगा टू माय अमेरिकन हिस्ट्री क्लास। ठीक है, देयर आर इजियर एग्जाम्पल। जो पहला मैंने सेंटेंस बताया था, दिस इज प्रोबेबली इजीएस्ट एग्जाम्पल फॉर यू टू गो थ्रू एंड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि किस चीज लाइब्रेरी के पीस को लाइब्रेरी के पीस से कंपेयर कर सकते हैं, लाइब्रेरी के एटमॉस्फेयर को क्लास के एटमॉस्फेयर से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के एटमॉस्फेयर को क्लास से सिर्फ कंपेयर नहीं कर सकते। अली के सेंस ऑफ ह्यूमर को अहमद के सेंस ऑफ ह्यूमर से कंपेयर कर सकते हैं, या अहमद को अहमद अली से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ होता है ना कि इंसान की, आप किसी इंसान की काइंडनेस को अगले इंसान की काइंडनेस से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी इंसान को किसी और इंसान की काइंडनेस से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, yes, when sentences are longer it becomes difficult, but once you practice this then you will build an insight कि क्या सही ऑप्शन होगा, या इसमें ये गलत हो सकता है या नहीं हो सकता। So we are on question number 8, right? Let's see. After arduous months of fighting, the sight of the white flag being raised generated as much relief on the victor's side than it did on the vanquished. अब यहाँ पे क्या होगा? वो कह रहे हैं कि जो as much relief on the victor's side as it did on the vanquished. Vanquished को sight of relief victor side की sight of relief से तो नहीं कंपेयर कर सकते, राइट? अब let's look at the options. अब मेरे दिमाग में पहला ऑप्शन आ रहा है on the vanquished, या तो on the vanquished side होगा, on the vanquished होगा, या on the vanquished side होगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ होगा। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन ए तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली, बिकॉज वैनक्विश्ड से कंपेयर नहीं कर सकते आप साइट ऑफ रिलीफ को। एज मच रिलीफ अमंग द विक्टर्स एज अमंग द वैनक्विश्ड, नॉट रियली, नो, दिस सेंटेंस, बट नो, दिस सेंटेंस कैन बी राइट, बिकॉज इसके अंदर हम कह रहे हैं दोनों में इक्वली एज मच रिलीफ दोनों में इक्वल दोनों साइड्स में हुआ था। So B can be an option. Let's look at C. As much relief on the victor's side as it did on the vanquished. It could be yes. Relief both on the victor's side as well as the vanquished. This also seems correct. Relief both for the victor and the vanquished side. No, यहाँ पे vanquished side and the victor side अलग-अलग होना चाहिए था. So this cannot be a correct option. अच्छा, अब now if I look at option number B, C and D, can someone tell me कि सबसे आसान सेंटेंस कौन सा है बोलने में? Can someone tell me कि B, C और D में, B, C और D में सबसे क्लियर, शॉर्ट, कंसाइज सेंटेंस कौन सा?
Ask me what artist means. Artist means very difficult. बहुत taxing, बहुत थका देने वाली, बहुत मुश्किल. Yes. So if I look at it, तो मेरे पास C और D correct options हैं, but मेरे पास B एक much concise option है. कम words में मैंने अपना मतलब बता दिया पूरा. ठीक है, ना मैं अपने मतलब से हटी, ना मैंने सेंटेंस को बहुत elongate किया. तो ऑप्शन B is the right option here. ठीक है, वाई करेक्ट ऑप्शन सी और डी भी है, बट ऑप्शन बी इज द मोर कंसाइज ऑप्शन. जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आए जिधर मुझे लगे कि ये तीनों सही हैं, बट इसमें से एक कंसाइज है, कंसाइज रियली मैटर्स. ना सेंटेंस का मतलब चेंज हो और कंसाइज तरीके से, क्रिस्प एंड शॉर्ट तरीके से हो, तो वो बेहतर है. आई एम सेइंग ए मैंने इसलिए हटा दिया बिकॉज वो गलत कंपैरिजन कर रहा था. ई मैंने इसलिए हटा दिया यहाँ पे क्योंकि रिलीव बोथ फॉर द विक्टर्स साइड एंड द वैनक्विश साइड होना चाहिए था, तो ई मैंने इसलिए हटा दिया. बी, सी और डी मेरे पास ऑप्शंस है, उसमें से बी मेरे पास सबसे कंसाइज ऑप्शन है, जो कि इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस. ना वो ओरिजिनल सेंटेंस के मीनिंग से डिविएट कर रहा है, ना उससे हट रहा है, और ना वो बहुत elongated है as compared to the rest of the two. Option B is the clearer of the three options. Now look at question number 9 and 10 quickly. The best way to encourage innovative thinking is to not promise financial rewards for ideas, but to ensure that the person making the suggestions receive recognition for his contribution. Wait a minute. Look at the options here. The best way to encourage, but to ensure that the person making the suggestion receives recognition for his contribution. Okay. But to ensure that the person who makes the suggestion will be receiving question answer B, तो मैं option B तो मैं ऐसे ही हटा दूं because it is too long. I do not need so many words in the first go. तो मैंने option B इसीलिए हटा दिया because it is adding more words than necessary. Option C, but rather by you ensuring that the person making the suggestion receives recognition for his contribution seems okay. ठीक है. But rather, I'm on option number D, but rather ensure that the suggestion maker receives recognition for his contribution. Suggestion maker might be a concise word for the person who makes suggestion, but suggestion maker is not a word that's commonly used. ठीक है. Licensed practitioner ऊपर वाले sentence में commonly used word है, but इधर suggestion maker is not something that is used commonly or that is prevalent. ठीक है. So it doesn't sound correct. Both option number D and E मैं इसलिए कट ऑफ कर रही हूँ because suggestion maker yes concise है, लेकिन क्या correct है, the most appropriate है, not really. Suggestion maker is not a commonly accepted or used phrase. ठीक है, वो आपने एक short करके दो चीजों को लिख दिया, but it's not something that's commonly used or accepted. ठीक है, so it leaves me with question number C, but rather by ensuring that the person making the suggestion receives recognition for his contribution, because this option provides a clear and effective contrast के emphasize कर रहा है कि recognition over financial reward, कि जो recognition है that is chosen over financial rewards. ठीक है, let's read the sentence again with the correct option so it's a bit more clear. The best way to ensure innovative thinking is not to promise financial rewards for ideas, but rather by ensuring that the person making the suggestion receives recognition for his contribution. Yes, C and D also do not follow the parallelism. Yes, Iman, you're right. Okay, someone's saying option A is correct. Why, can you tell me why do you think option A is correct? Sorry, Irfan, you please tell me what you don't understand so I can go over it again. Okay, I'll tell you why. Because option A में हमें ये contrast दिखाना है कि हमें emphasize करना है recognition over
financial reward. हम क्या कह रहे हैं sentence में? The best way to encourage innovative thinking is not to promise financial rewards for ideas, but to ensure that the person making हमें एक contrast दिखाना है जिसमें हम ये emphasize करें कि financial reward से ज़्यादा emphasis होना चाहिए recognition पे, ठीक है? उसको अगर हम देखें, so जब rather हम यहाँ पे add कर देते हैं sentence के अंदर, so it is providing a clearer contrast. So that's why option C is correct. Okay, the best way to encourage innovative thinking is not to promise financial rewards for ideas, but rather by ensuring that the person making the suggestion receives recognition for his contribution. यहाँ पे हमें ये clearly पता चल रहा है कि हमें क्या चीज emphasize करनी चाहिए over what. Is that clear? Question number 10, because we're lagging behind. Option number 10 is, it ought to be her with whom you share your secrets, not me. Let's see the options. With her with whom you share your secrets, not I. Does anyone think there's anything wrong with question number 10? Question 10 में कोई गलती किसी को obvious नजर आ रही है? Her, whom, me में not me आना चाहिए, not I आना चाहिए. पहले तो ये decide कर लेते हैं ताकि options छोटे कर लें. मतलब हम let's cut down the options. Not me or not I. Okay. So not I वाले options तो मैं पहले ही cut कर दूं. Okay. Who आता है जब subject होता है. यहाँ पे whom use हो रहा है because ये subjective है. Subject है वो, because ये this is not the subject of the sentence. ठीक है. It ought to be her with whom you share. You is the subject here. ठीक है. You यहाँ पे subject है. तो यहाँ पे अगला जिसकी बात हो रही है कि जिसके साथ आप शेयर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली सेंटेंस का, बट इट विल नॉट बी द सब्जेक्ट. ठीक है. लेट्स से दैट हु तब यूज होता है जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, जब वो कोई एक्शन कर रहा हो. इस सेंटेंस में एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? यू परफॉर्म कर रहा है ना एक्शन. या जिसके साथ सीक्रेट शेयर हो रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन. जिसके साथ सीक्रेट शेयर हो रहे हैं वो तो एक पैसिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा. सो इन दिस सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट. It ought to be her with whom you share your secrets, not me. Does anyone have any question? Who इसलिए नहीं हो सकता because who is used as a subject. With who you share नहीं होगा. Who तब होगा who do you think is making that noise. जब वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जब वो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा. यहाँ पे जिसके साथ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं वो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा. दैट्स अ पैसिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय यू. ठीक है. सो whom इज करेक्ट हियर. एग्जैक्ट सेम गोज फॉर शी. शी तब यूज होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वो यूज हो रहा. यहाँ पे जिसके साथ वो सीक्रेट शेयर कर रही है वो एक सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज हो रहा, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. इसलिए वी विल यूज हर. सो हर यूज होगा और आई यूज और मी यूज होगा, तो बाकी ऑप्शन मैंने ऐसे ही कट कर दिए. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस. ठीक है. नाउ दैट वी डन विद 10 क्वेश्चंस, वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल issues that can come up in sentences. I am assuming that there will be practice exercise number 2 and 3. Okay. So this is good for you guys, that you guys have more questions to do after we've done this one sheet. Okay. The rest of the questions will have similar patterns as the first 10 questions that we did. If I go into the next 2 exercises, that will take a lot of time. I will share this. If you guys want, I will share this. So I will go to I will now go to sentence completion. I will just have 10 minutes. So I'm not really sure if I'd be able to do that correctly or not. Okay, someone asked me. Question number 9 ka, why is C, as it is not following parallelism, it is using ensuring and not also to. Let's see. Okay, we are on lecture number 4, sentence correction की जो mixed practice exercises मैंने दी थी. We are going to discuss those in class right now. If you want to share your answers, please go ahead. If not, then I'll go ahead with it. There are no options for it. There are no options for this one. You will have to just point out where the error in the sentence is. Not point out even, but just send a correct the correct option. The correct answer for this. There's no option. You have to rewrite the sentence to make it correct. So I'll explain. Jaise question number 1 hai, having worked hard for months, the project finally reached its completion. There is an error in this sentence. You have to find what the error is and then rewrite the sentence so the error is eliminated. I should have opened a PDF. I should have opened a Word file instead of a PDF because I
do not think I can write on it, but I'll try to make the best of it right now. Okay. I'm gonna go right into this because we do not have a lot of time. So अगर मैं ये question देखूं, इसमें सबसे बड़ा problem क्या है? Comma के बाद they're saying the project finally reached its completion. Having worked hard for months. Worked hard for months. किसने work hard for months किया है? Did the project work hard for months? I need a yes or no. Did the project work hard for months, or someone worked on the project for months? The project, अभी इसका मतलब बन रहा है कि the project finally the project worked hard for months, right? So यहाँ पे मैं इसको rewrite करूंगी. Let's say I will rewrite it as guys, I'm so sorry for my bad handwriting here. Having worked hard for months. Wow, it's just terrible. क्या हो सकते हैं? क्या पेन चेंज करूं? Okay, I'll change the pen. I hope that helps, but I don't think it's gonna help, to be honest. But if you say so, I'll go with it. Yeah, it's not really, guys, my handwriting in real life is not this bad. So यहाँ पे मुझे sentence ऐसे करना है कि I'm gonna add. I know I can. I should have opened a better either a better browser or a Word file. Guys, थोड़ा सा boomer हो रहा है feel मुझे. But let's go ahead with it. I'm not gonna type anything down. You guys write the correct answers down. Having worked hard for months, the project that she worked on completed, finally reached its completion. क्या ये correct होगा या नहीं होगा? Having worked is made sense. Yes, having worked hard for months makes complete sense. इसका हो सकता है, I'm going to tell you what the correct could be. Having worked hard for months, they finally completed the project, or he finally completed the project, or she finally completed the project. Yes, having worked is making sense. It makes complete sense. So the correct answer would be, one of the correct answers could be having worked hard for months. She finally completed the project. Na sentence ka matlab change hua. It just makes proper sense now. ठीक है? Now question number 2. Neither the teacher nor the student has understood the assignment. Neither the teacher nor the student has understood the new assignment. क्या आना चाहिए, guys? What's the problem here? Correct? Why? Because जो closest to the verb होता है उसका हम follow करते हैं tense structure. So students is वो तो have आना चाहिए. Have understood the assignment. ठीक है? Correction, guys, खुद करते रहो अपने पास. जैसे भी कर सकते हो. I am unable to do the corrections at this point because or if you guys can give me a minute so I can open my Word file for this. हाँ, but वो फिर ना space उसमें create नहीं होती है for some odd reason. Okay, the rest of you do the next options. जब तक I'm finding that file, do the next options, please. So we can get through this as quickly as possible. Okay, so यहाँ पे set का कोई past form use होगा, so we can, let's say, use another word for it. Let's say we can say the athlete not only broke the record nor established a new standard for sportsmanship. ऐसा word जो के पिछले वाले का parallelism की वजह से, parallel structure की वजह से हम ऐसा word चाहिए जो के past में हो, जैसे broke है. ठीक है? Now let's go to question number 4. The politician gave a speech and promised to lower taxes. Can someone tell me? Yes. The comma is incorrect because यहाँ पे हम दो independent clauses को join नहीं कर रहे. ये fanboy की तरह and नहीं use हुआ है. ये and एक connector की तरह use हुआ है. The politician gave a speech and promises to lower taxes. Subject is same and everything is same. ये दो independent clauses नहीं है. यहाँ पे comma नहीं आएगा. Option 3 दोबारा explain कर दूं. The athlete not only broke the record, but also established a new standard. Yeah, but also set a new standard. Because past की बात कर रहे हैं ना हम. This has already happened. Broke the record has already happened. He has already broken the record, or she has already broken the record. Not only but also, yes, not only but also का structure follow होगा. So the athlete not only broke the record but also set a new standard.
नॉट ओनली के साथ नॉर नहीं आता, नाइदर नॉट, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयरिंग होगी, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होता है, या फिर नाइदर होगा और नॉर होगा। यस यस, या तो हम ये भी कर सकते हैं करेक्ट करने के लिए, द एथलीट नाइदर ब्रोक द रिकॉर्ड नॉर सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर स्पोर्ट्समैनशिप। या तो नाइदर नॉर यूज करेंगे, या आइदर और यूज करेंगे, या बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करेंगे। यू आर करेक्ट, दिस इज अनदर वे टू करेक्ट दिस सेंटेंस। द पॉलिटिशियन गेव अ स्पीच एंड प्रॉमिस टू लोअर टैक्सेस, एंड यहाँ पे एक कनेक्टर की तरह यूज हुआ है, ये एक फैन बॉय की तरह नहीं यूज हुआ हुआ, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सेम, दीज आर नॉट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. This is, we are talking about the same subject here, so we will not need a comma here. Question number 4 में. Question number 5 में, guys, I'm going to go a little over time, so हम जल्दी से इसको कर लेते हैं. Question number 5 में, the new law will affect everyone's taxes, which was a concern for many voters. Can someone tell me what the problem with question number 5 is? Which word? Why do you think it's going to be which word? अच्छा, अब can someone tell me कि न्यू लॉ कंसर्न फॉर मेनी वोटर्स है, या इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस, इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इज अ कंसर्न फॉर एवरीवन? कंसर्न क्या है? विच वॉज अ कंसर्न फॉर मेनी वोटर्स, यहाँ कंसर्न क्या कंसर्न है? न्यू लॉ कंसर्न है या टैक्सेस कंसर्न है? टैक्सेस कंसर्न है. द न्यू लॉ कंसर्न नहीं है, टैक्सेस का अफेक्ट होना कंसर्न है. यस, सो क्योंकि टैक्सेस प्लूरल है तो यहाँ पे होगा विच वर अ कंसर्न फॉर मेनी वोटर्स. ठीक है, विच यहाँ पे रेफर कर रहा है टैक्सेस को, एंड नॉट द लॉ इटसेल्फ. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. द कंपनीज डिसीजन टू रिलोकेट वाज बोथ. यस, the new law will affect everyone's taxes, which were a concern for many voters. Let's go to question number 6. The company's decision to relocate was both surprising and disruptive to their employees. Okay, can someone tell me कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 बताना चाहिए प्लीज, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 का एरर हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी. यहाँ पे क्या, कौन सा देयर में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे देयर कंपनी सिंगुलर है, कंपनी प्लूरल है. कैन समवन टेल मी, इज कंपनी सिंगुलर, कंपनी प्लूरल? कंपनी इज सिंगुलर और प्लूरल? कंपनी itself, the company is a company. A company is singular और plural? सिंगुलर है, ठीक है. सो देयर एम्प्लॉइज कैसे होगा? सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा ना. सो सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज होगा देयर की जगह? द कंपनीज डिसीजन टू रिलोकेट वाज बोथ सरप्राइजिंग एंड डिस्ट्रप्टिव टू डैश एम्प्लॉइज, टू इट्स एम्प्लॉइज, राइट? बिकॉज देयर एम्प्लॉइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंपनी, एक कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, वो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा. ये हम सेंटेंस करेक्शन के रूल्स में कर चुके हैं. इफ समवन इज नॉट अवेयर, इसी लेक्चर में ऊपर जाना, लेक्चर नंबर 4 में सारे हम रूल्स डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, हर रेज्यूमे वाज अपडेटेड एंड सेंट टू द कंपनी. उसकी रेज्यूमे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई थी या किसी ने अपडेट की थी? ये सेंटेंस पढ़ के मुझे लग रहा है कि उसकी रेज्यूमे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई, कि जैसे कोई हैरी पॉटर में कोई वॉन्ड ने मैजिक दिखाया एंड हर रेज्यूमे वाज ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड वाज सेंट टू द कंपनी. रियल लाइफ में ऐसे होता है, या रियल लाइफ में अ सब्जेक्ट हैज टू परफॉर्म एन एक्शन? यस अली, शी अपडेटेड. नॉट सो मच, नो, कॉमा नहीं. यहाँ पे कह रहे हैं excited about the excited, who was excited about the opportunity? Her resume was excited about the opportunity, because when I look at the sentence it says excited about the opportunity, her resume was updated. No, right? The resume wasn't excited about the opportunity, she was. तो हमें सब्जेक्ट को यहाँ पे पहले लेके आना है कॉमा के बाद. So it can be excited about the opportunity, she updated her resume and sent it to the company. ठीक है, excited about the opportunity, she updated her resume and sent it to the company. ठीक है guys, I'm assuming, I'm hoping that you guys are writing all of these things down. I'm going to do till 10 because we are going to go over the allotted time. The team worked tirelessly to achieve success. They succeeded against all odds. I need everyone to get question number 8 correctly. Question number 8 में क्या error है?
अभी हमने वो एरर डिस्कस भी किया है. नो, नो. दे सक्सीडेड अगेंस्ट ऑल और द टीम वर्क. ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, सेमीकोलन से ज्वाइन हो सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. नोप, नोप, नोप. Brownie points to whoever gets this one correct. Nope. The team worked tirelessly to achieve success. They succeeded against all odds. Fawad, this one goes to you. The team worked tirelessly to achieve success. It succeeded against all odds. टीम सिंगुलर यहाँ पे सिंगुलर एक्ट की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल की तरह? एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल यूनिट की तरह यूज हो रहा है? एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज हो रहा है ना, कि टीम ने टायरलेसली काम किया टू अचीव द सक्सेस. इट सक्सीडेड अगेंस्ट ऑल ऑड. टीम इज सिंगुलर. ठीक है. यस लाइबा, you're correct. Question number 10. The book was not only informative but also entertaining for its reader. What's the error in this? Okay, go ahead. I need more answers. क्या question number 9 rewrite होके क्या होगा? Okay, I'll tell you what the problem here is. हम यहाँ पे for की जगह to लगाएंगे. क्यों? क्योंकि जब हम sentence को break करके दो हिस्सों में करते हैं, the book was not only informative but also entertaining for its reader. Let's break it down. The book was not only informative for its readers. The book was not only entertaining for its readers. So we need to use to here instead of for, ताकि parallelism रहे informative और entertainment के बीच में, entertaining के बीच में. Okay, good. But also not entertaining for its readers. यहाँ पे not only inform, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि entertaining नहीं थी और informative नहीं थी. वो कह रहा है कि was not नहीं ना सिर्फ informative नहीं थी but entertaining भी थी for its reader. Okay, question number 10. Each of the student must complete, this one should also be very easy. Question number 10. Each of the students must complete their homework before the end of the day. इसमें क्या problem है guys? Quickly, I need an answer for this. This one is also very easy. Okay, very good, Mustafa and Shahan and Iman. The rest of you, I haven't seen the answer, but yes, यहाँ पे each of the student is singular, तो यहाँ पे his और her आएगा. Yes, so in this answer, I would like to believe that we do not have an error in answer number, which was it? Question number 9. For or to, यहाँ पे दोनों students will come with. Each of the student must complete his or her homework before the end of the day. Yes, each of the student must complete. Each of the student must complete his or her homework before the end of the day. Students नहीं, student, because each singular है यहाँ पे. ठीक है. Question number 9. Yes, I personally think that for is to might be better than for here, but the sentence is grammatically correct. The question number 9 has no error. The book was not only informative but also entertaining for its readers. Okay, so what I'm gonna do is I am gonna continue with till question number 15. If anyone wants to leave, because obviously I asked you guys for 1 hour, it's been 1 hour and 15 minutes. If you guys want to leave, please do. I will continue the class, and if you want, you can listen to the lecture later, because I don't know if you guys have any more commitments after this or not, but I will try and complete the first 15 sentences. Wait a minute, guys. Okay. Someone said something. It shouldn't be also in question number 9. Book was not only informative but also entertaining for its readers. I don't understand, Iman. Can you explain what you're trying to say about question number 9? The book was not only informative but also entertaining for its reader.
Grammatically, this sentence, there's nothing wrong with this sentence. We do not need a was here. I mean, you guys are free to go. I'm just going to complete this for people who want to stay quickly, ताकि I'm done with all these questions. Okay? Walking down the street, the store caught his attention. Can someone tell me, is there a problem? Who was walking down the street? He was walking down the street. So we were going to write walking down the street. He noticed the store, let's say. Because he was walking down the street, not the store. The store wasn't walking down the street. Misplaced modifier 11 mein. 12 mein, the debate on climate change was both controversial and complex. Can someone tell me if there is an error in the sentence? No, word nahi aayega because debate is singular. But यहाँ पे problem है vocab में. यहाँ पे we would use complicated instead of complex here. ठीक है, ताकि आपका parallelism बने, parallel structure बने with controversial. ठीक है. Then we have question number 13. The CEO announced the merger with the competitor. This news shocked the industry. Someone tell me what the problem with 13 is. यहाँ पे we would use a which competitor, comma, which shocked the industry. This would be like a modifier जैसे हम कहते हैं non-essential clause कहते हैं. तो this is that. ठीक है. The CEO announced the merger with the competitor which shocked the industry. ठीक है. This would be the change in the question number 13. Now I'm going to go to question 14. I'm sorry guys, I'm a bit fast here because I need to complete this. Question 14, the students were asked to read the book and write a summary of it. Question number 14 में of it is not necessary बाद में. The students were asked to read the book and write a summary. क्योंकि यहाँ किसी और चीज की बात नहीं की है. यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि the students were asked to read the book and the poem and write a summary of the book. यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है. So of it is not necessary here. यहाँ पे एक additional redundant है. Because write a summary, हम book की ही बात कर रहे हैं. So the students were asked to read the book and write a summary. That's it. That makes enough sense. Then question number 15. Question number 11, mein, what are you saying? Walking down the street. As he was walking down the street, the store caught his attention. Yes, it is another way to correct the sentence. There are multiple ways to correct these sentences. Once again, you are not going to be tested like this. कि आपको बोलेंगे sentence rewrite करें पूरा बगैर options के. I have not given you options here to build a sense on your own without looking at the options. ठीक है, without looking at the options, you should be able to see कि क्या problem है. Because जब options आते हैं,